Morning, 8th class. So, yesterday we were reading the lesson Children's Special Rights, right? And we have read about that with these human rights, there are some special rights also that are for the children. So, in early 1990, it came out with a long list known as the rights of the child. Below, some of these rights are presented and explained. So we have talked about this, the first one, the right to education. This involves making primary school education affordable for all. Means it should be reasonable, inexpensive. It should not be that expensive that all the people should not afford it. Secondly, then it should provide encouraging the students to attend the school regularly, providing opportunities to receive the type of secondary and tertiary. Tertiary, I told you, it's like the vocational education, means some course or some talent education will be given to you so that you can earn your living with that. That education suits them the best. Means उनका जिस तरफ थोड़ा सा aptitude हो वो check करके, like if somebody is good at somebody likes to do the plumbing work, so we can give some formal education, some course, means some diploma type course will be organized for that person, so that he can learn more about plumbing and he can earn his living by doing all these things. Or if he feels interested in rectifying all these electronic objects, or if he's good at repairing the mobile phones, so all these small type of small scale courses can be given to these given under these vocational courses, so where they can just, where there is a less of literature, less of this theory part and more of the work experience. So in that, practical work is more. So such people, those who cannot study much, they can just earn their living by doing all these works. Third point is helping to prepare students to participate in free society, such as nurturing a spirit of peace, tolerance and equality. Like when you are coming to school, no doubt you come to study, right? Teachers tell you, teachers are always there to guide you. But with only the education, you don't become a good person. For that, you need to know how to behave with each other, how to stay in a society. Means आपको सिर्फ पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, उसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए. सबके साथ मिल के रहना, कोऑपरेट करना, शेयरिंग करना, विद पीस रहना, टॉलरेंस होना और एक दूसरे को सबको अपने बराबर समझना. So all these qualities are also needed to be a very good citizen. So we have to help prepare students to participate in free society. Means they should become a good citizens. They should behave properly with each other. They should be very cooperative. They should they should have the spirit of peace and tolerance with each other. What I mean to say is, the second is the right to recreation. Here involves enjoying free time to rest and play. So in this they should enjoy. This is the right to recreation. Means उनका इतना right भी बनता है कि पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ उनका रिक्रिएशन का भी right है. Means ये नहीं कि वो सिर्फ पढ़ते ही रहें, रिक्रिएशन सबको चाहिए होती है for the refreshment of mind. So enjoying free time to rest and play मीन्स पढ़ाई के बाद आपको भी अच्छा लगता है कि थोड़ा सा रिक्रिएशन हो, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए, आप फ्रेश हो जाएं. इसमें आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, आप प्ले भी कर सकते हैं, और यू कैन डू ऑल द थिंग्स विच यू वांट टू डू विच मेक्स यू हैप्पी. Taking part in cultural activities such as listening to people read and tell stories, playing music, painting, singing and carving. So you can do choose your hobby, or whatever you feel like doing when you are free. Like somebody likes singing, some
somebody likes gardening or playing music, singing, carving, things like that, whatever you feel like, means this is also a right of a children, so that they should involve in all these things also, apart from the studies. Then the third right is right to protection from abuse. Now it is also very important. By abuse, what do you understand by abuse? Abuse is बच्चे mistreatment, cruelty or a misuse of something, right? आजकल तो nowadays आपको आज बहुत सुनने में आ रही होंगी ये बातें, child abuse, and it's a very 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 bad part of our society. So it is the very most important right of a child. This involves finding, reporting, stopping cases of abuse and neglect of children by the parents and other caretakers. Like they have a right, if they are abused or neglected by the parents or the other caretakers in the sense like those who are orphans or those who don't have their parents. Caretakers and guardians are taking care, and they are taking advantage of that thing that they don't have the parents. So in that case, sometimes they abuse the child, they neglect maximum times they abuse the child. Either they mistreat them or they sexually abuse them. आजकल तो बहुत सारे केसेस आपको टीवी में रोज सुनने में मिलते होंगे, जो एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, सेक्सुअल अब्यूज. बच्चे को आप सेक्सुअली परेशान करते हैं. तो अगर ऐसे केसेस कुछ होता है, बच्चे के साथ कुछ होता है, तो उसको एवरी राइट है उसको ढूंढकर रिपोर्ट करने का और उस ऐसे केसेस को स्टॉप करने का. नहीं तो इन चीज़ों का बच्चे के माइंड पे और बॉडी पे, दोनों पे बहुत खराब असर पड़ता है. So we have to find, report and stop cases of abuse, neglect of children by the parents and other caretakers. Second, providing children with places where they can be free from abuse. Secondly, हमें उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो फ्रीली जिंदगी जी सकें, जहाँ उनको कोई डर ना हो कि उनके साथ कोई ऐसा मिसट्रीटमेंट या कोई क्रूएलिटी होगी या कोई एक्सप्लॉयटमेंट होगी. Third is helping children families provide these safe places. Third point is that helping children families means हमने उन families को help करना है कि बच्चों को ऐसी safe places दें, बच्चों को ऐसी safe families दें जहाँ पे बच्चे freely grow कर सकें. We have to nurture them. We don't have to mistreat them. We don't have to exploit them. So these rights are very important for the child's growth. अगर इनमें से कोई भी बच्चे को चीज़ नहीं मिल पाती है तो वो बच्चा, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत डिफरेंट बनती है. कहीं ना कहीं वो फिर मेंटली उसको अफेक्ट करती है और फिर वो बड़ा होकर उसकी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है. हो सकता है वो गलत रास्ते पे चल पड़े. क्योंकि हो सकता है उसके चाइल्डहुड में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने उसे चेंज कर दिया. तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. फोर्थ इज द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिचुएशंस ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. Like this involves not forcing children under the age of 15 to fight in the armed forces. Means 15 की एज के नीचे के बच्चे आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जा सकते, आर्मी and all that, military. And taking the eldest ones first if the children between the ages of 15 and 18 are used in armed forces. Like अगर आपने बच्चा लेना ही है उसमें, taking the eldest one first if the children between 15 to 18 are used. और अगर आपको मतलब लेना ही है बच्चा उस फैमिली से, तो आपको एल्डेस्ट वन को लेना पड़ेगा, एल्डेस्ट वन फर्स्ट. इफ द चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 15 एंड 18 आर यूज्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस. तो 15 या 18 अगर आपको किसी फैमिली में से लेना ही है बच्चा, तो आपको एल्डेस्ट वन लेना पड़ेगा जो कि 15 से 18 की एज ग्रुप में हो. Right to protection against economic exploitation and child labor. Like
इस राइट में आपको उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड लेबर से बचाना है, ये वो राइट है. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बच्चे, नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू डू वर्क दैट इज डेंजरस और प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रिसीविंग एन एजुकेशन. मीन्स एक तो उनको ऐसे काम, दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग द डेंजरस वर्क. They should not be allowed to do work. As you all know that there is a Child Labour Act. Under that act, the child is below the age of 14 cannot work. So enforcing laws about the age from which children may work and the number of hours a day they can work means under 14 children are not allowed to work. Secondly, the work they are doing should not be dangerous and prevents them from receiving an education. Means child should not be forced to do work for the economic sake, for raising his family, for raising his income of the family. Means he should not be devoid of education. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन छुड़वा कर आप उससे काम करवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए. No, this is against right. फिर दूसरी बात, एनफोर्सिंग लॉज फॉर द एज. मीन्स एक लिमिटेड एज है, आप अंडर 14 एज के बच्चों को काम के लिए नहीं भेज सकते हैं. सेकेंडली, और इतने घंटे ज्यादा, देयर शुड बी सम स्पेसिफिक आवर्स फॉर विच द चाइल्ड विल वर्क, नॉट मोर देन दैट. मीन्स आप चाइल्ड को इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. कहने का मतलब ये है. द राइट ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन. नाउ ऑल children are not normal like you people are so lucky. Should be thankful to God for that we are so lucky that you have made us proper with all this. Means you have no disability in yourself. You should thank God for that. You should be grateful for that. But some are misfortunate children, they are disabled. So for example, assisting disabled children to live a full and dignified life. मीन्स कुछ बच्चे होते हैं डिसेबल्ड होते हैं, मेंटली भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं. उनको ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को फुली और डिग्निफाइड तरीके से, मीन्स रिस्पेक्टफुल तरीके से जी सकें. ये नहीं कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है या उनके साथ बायस हो रहा है कि नहीं जी ये काम नहीं कर सकता, ये यहाँ नहीं पढ़ेगा, ये यहाँ नहीं बैठेगा. मीन्स उसको भी डिग्निफाइड लाइफ का पूरा राइट है. ऑफरिंग स्पेशल केयर टू दीज चिल्ड्रन. ऐसे बच्चों को पूरी स्पेशल केयर मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं. परमिटिंग देम टू प्ले एन एक्टिव रोल इन देयर स्कूल्स एंड कम्युनिटीज. मीन्स हमें उनको पूरा कोऑपरेट करना चाहिए कि वो हमारे स्कूल में, हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में आगे बढ़े और एक्टिवली रोल प्ले करें. ये नहीं कि हम ही उनको पीछे कर दें. नो, यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग, यू कांट डू दिस थिंग. नो, दिस एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर. मीन्स वी शुड बी वेरी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स देम. वी शुड बी वेरी encouraging towards them. We should motivate them to come and play an active role in our schools and in our community. They have full right. So what the UN did by stating these rights of the child was an important first step. So UN had stated these rights and this was the first important step they have taken. However, taking the UN's dream of a world in which children's rights are respected, making that world into reality is an extremely difficult thing to achieve. What can you do to make this happen? So we are saying that, however, taking the UN's dream of a world in which children's rights are respected means UN has taken this step. They have stated these rights of the child as an important step. Now, taking the UN's dream of a world in which children's rights are respected, UN ने अपनी तरफ से ये स्टेप लिया. मेकिंग दैट वर्ल्ड इनटू रियलिटी मीन्स उसको रियलिटी में भी बना दिया. इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग. ये अभी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव. दे हैव स्टेटेड दीज लॉज, चिल्ड्रन राइट्स, बट टू मेक इट अ रियलिटी इज स्टिल अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. So the question arises that what we can do to make this happen.
हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम उन बच्चों को और ऐसे जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, व्हाट वी कैन डू. सो द लेसन एंड्स विद दिस लाइन, means UN has stated these rights, he has written these rights, but to make it a reality is still a very difficult thing. And the question now is that what is the role of common man in making this happen? हम क्या कर सकते हैं इन राइट्स को रियलिटी बनाने के लिए.